Welcome to Sanfro East, a new podcast series from Kashmir. Today we have a very serious journalist, Mr. Amit Baruah, with us. He is visiting Kashmir and he has been visiting Kashmir for the past 3 decades. So he is here today as an independent journalist, although he has been previously associated with the Hindu, BBC and several other organizations. तो इस बार ये लेकिन he has asked me to introduce him as an independent journalist now. तो आज हम इनसे बात करेंगे about his experiences in Kashmir, his general experiences and his experience as a reporter. So welcome to the podcast, sir. Thank you, Azan. I'm so happy to be here. So my first question would be, how is your experience this time different? You have been visiting here, as we were speaking earlier, from 89 to 95, some of the most dangerous times, if we say, of Kashmir. So how is it different today? So, Azan, I came in 2017 and 2019 as well. So the main difference is, at that time, filing stories was very difficult. Mm-hmm. Today, the ease of filing stories makes life much easier for a reporter. So that time we were half giving on phone to our colleagues in the office, sometimes by telex, a machine which many of you may not even have seen, and also by fax. So we used to go to that CTO near that Residency Road. I believe it has moved now. It is no longer there. And in the evening, it was bitterly cold sometimes, and it was very tough to file stories. Mm-hmm. The easy thing was that whenever I came, there were difficult times and mostly there was curfew. तो एयरपोर्ट से शहर आना काफ़ी मुश्किल काम होता था, लेकिन फिर हमारे जो J&K पुलिस के दोस्त थे, उनसे हम रिक्वेस्ट करके शहर तक आ जाते थे, फिर टैक्सी वैक्सी मिली जाती थी. So it was a tough time, and it was the only good thing was with curfew हमारे पास तो पास होते थे, तो the people who you wanted to meet, especially the political leaders, वो घरों में ही होते थे. So you knew whatever time you reached, you would find them. You don't have to wait so long. So those were the plus points. But on the other hand, it was a big human tragedy, and I never liked to visit Kashmir after that as a tourist. And I think I came after that possibly in 2011 for a friend's marriage with my wife and some friends. So it was a bad time, 89 to 95. And तो उसके बाद मेरा मन कभी किया नहीं कि though it's such a beautiful place to come and visit, but all the things that I saw, never sort of, propelled me to come again. So it was good I came in 2017, and then in November 2019, post the changes that happened in August 2019. So yeah, it was a tough job, tough place. But I think if you have empathy for a place, it helps you in understanding it. So I do believe that I have some sense, because I have kept up with some of my friends. Many of my sources have passed on, and I myself am 60 years old now. I have retired officially from the Hindu. So yeah, but it has not dimmed my appetite as a reporter. I can compete with the next person younger than me. So I have enough energy to go. So, and I enjoy reporting, and that's what I've done. That's the only thing I've done since 1988. We have grown up reading your coverage of Kashmir, of Indian politics and all. But for our readers, for our audience actually, a lot of whom are in Kashmir, 89 से 95 तक अगर हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो आपको अभी तक which have stayed with you. I know for a fact that आपने रुबैया सैयद की किडनैपिंग कवर की है, उसके अलावा बहुत आई थिंक हजरतबल जो सीज भी था वो भी आपने कवर किया. थोड़ा अपना उसके बारे में एक्सपीरियंस बता सकते हैं एज अ आउटसाइडर एंड एज अ जर्नलिस्ट बोथ, कि कैसा रहा? देखिए, मैं 10 दिसंबर 1989 को श्रीनगर पहुंचा. काफ़ी सर्दी थी, मुझे कश्मीर की के स्पेलिंग भी नहीं आती थी, लेकिन the people who helped me were, many of them were Kashmiri officials for whom I remain eternally grateful. और खुशी की ये बात है कि despite all the troubles, बहुत हमको खबरें मिली. Like I got to know that the then DGP Ghulam Jilani Pandit, drove post the agreement. There were many intermediaries to help in the release of Rubiya Sayeed. That he personally drove her in his DGP's car, to Mufti Saab's house, which was near the airport, where we reached around 7 o'clock. So there are many, during Hazratbal, we were here for 1 month staying in Adus, not far from where your
74 East is being recorded. So, you know, there were lots of journalists, we made lots of friendships, those friendships endure. और इस बार भी जब मैं आया तो मेरे काफ़ी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे सबसे मुलाकात हुई और बड़ी बड़ी खुशी हुई उन लोगों से मिलकर. But as I said, it was tough times, and the critical thing was, I think that you know, so I was reporting for the Hindu and Frontline at that time, and Harinder Baweja, also known as Shammi Baweja, was reporting for India Today, and Shiraz Sidhwa was reporting for Sunday. She unfortunately passed on recently. So I think that what we did, and there were other journalists like Askari Zaidi of the Times of India at that time. So I think what we did was that we lent an independent perspective into what was happening, so that the rest of India could know, you know, so when the election boycott happened, or the Lok Sabha elections in 1989, nobody knew what was happening. I myself didn't know as a reporter why people in Kashmir boycotted that election. So I think independent voices in troubled situations are very important. और मेरा मानना है कि चाहे वो मेरी रिपोर्टिंग हो या शिराज की हो या शम्मी बवेजा की हो, ये सब रिपोर्टिंग ने एक अलग पर्सपेक्टिव हिंदुस्तान के रीडर्स को दिया. स्पेशली आई रिमेम्बर our reports in Frontline, they were very well received. और आपको पता है 15 दिन लोग यहाँ मैगजीन के लिए, अखबार के लिए वेट करते थे. वहाँ इंटरनेट नहीं था उस समय, कोई और हमने इंटरनेट का तस्वर भी नहीं किया था उस वक्त. So I think being independent, whether it is in that situation or today's situation, is critical. और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स बेस्ड हैं उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा थी. हमारे लिए ये आसानी थी कि हम लोग आते थे और जाते थे. और दूसरी चीज़ ये थी कि हम लोगों को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी एक्सेस था. वो भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना एक आधा पर्सपेक्टिव मिसिंग रहता. और उस वक्त एहतजाज बहुत होते थे, सरकार का कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर था, इंसिडेंट्स बहुत होते थे. मुझे याद है यहाँ गांव का दल में फायरिंग हुई थी जनवरी 1990, कई लोग उसमें मारे गए थे. So I was able to report all those events and put them in perspective, and I think in some small way जो और ये जिनका नाम लिया उनके अलावा भी बहुत सारे लोग आते थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट अखबार के, टेलीग्राफ, सब काफ़ी लोगों ने. तो मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. ऐसा कुछ खास, ऐसा कोई मोमेंट है कश्मीर में जो आपको प्रोफेशनल करियर में रहा है हमेशा, which has stayed with you basically, any moment which may a happy or a sad, whatever, जो आपको लगे? I think हजरतबल का जो सीज था, that's remained with us. उसमें कई फॉल्स अलार्म्स भी हुए. We had many किस people. तरह की फॉल्स अलार्म्स? फॉल्स अलार्म्स की एग्रीमेंट होने वाला है, फिर नहीं हुआ. तो जनरल जकी होते थे यहाँ पे सिक्योरिटी एडवाइजर, फिर वजाद हबीबुल्ला साहब भी थे, शायद वो डिविजनल कमिश्नर थे, और महमूदुर रहमान साहब थे, वो होम सेक्रेटरी थे. तो इन सब लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट था. और वो जनरल जकी लॉजिस्टिकली, क्योंकि आपको पता है हजरतबल से निकलना, तो वो बसों को रिवर्स में लगाना चाहते थे. दिस वाज हिज फेवरेट यू नो एक्सप्रेशन टू हिज कॉलीग्स. सो आई थिंक, बट वो जो एक्सपीरियंस था, इतने दिन हम यहाँ रहे, रोज शाम को नेगोशिएशंस होती थी. एक ब्रिगेडियर साहब थे एसपीएस कंवर, वो हमारी ब्रीफिंग करते थे शाम को रोज. तो बट मुझे लगता है कि इट वाज अ टफ टाइम, but in the end it was handled very amicably. तो हजरतबल का जो सीज है, it ended bloodlessly, क्योंकि उस टाइम कुछ भी हो सकता था. और तो वो जो मेमोरीज, रिपोर्टर्स के साथ रहना, हमारी दोस्तियां, आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ चेरिश्ड मेमोरी. फॉर आवर ऑडियंस, नेगोशिएशन एंड कैसे हुई बेसिकली, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ा है उसके बारे में, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. नेगोशिएशन, जहां तक अब मेरी मेमोरी थोड़ी धुंधली है, तो यू विल एक्सक्यूज मी, पर मुझे जो याद है कि आई थिंक गवर्नमेंट अलाउड द रिलीज ऑफ सम पीपल who were either inside Hazratbal or outside. I think you know they melted away somewhere. 5-6 लोग शायद ऐसे थे, और उसके बाद वो सीज खत्म हो गई. लेकिन 30 दिन तक चली और रोज फ्रंट पेज पे खबरें आती थी. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैं जब हिंदू में काम करता था, हमको बायलाइन नहीं मिलती थी. तो स्टाफ रिपोर्टर बायलाइन से छपता था. ठीक है. तो और भी चीज़ें थी कि जब मैं 89 में आया तो मैंने देखा कि हिंदू की रिपोर्ट्स में प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स लिखा जा रहा है.
तो जब मैं वापस गया तो हमारे एडिटर साहब हैं जी कस्तूरी साहब, इज नो मोर, और उन्होंने मेरे पास संदेशा था कि मैं उनको फ़ोन करूं जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूं। तो मैंने उनको फ़ोन किया एंड ही वाज अ वेरी ओपन एडिटर। हम एंड व्हेन यू आर अ यंग रिपोर्टर आप कई चीज़ें बोल देते हैं जो कुछ उम्र के बाद शायद आप ना बोलें। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने मेरे से पूछा तुम ठीक ठाक आ गए? मैंने कहा हाँ मैं आ गया ठीक ठाक। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारी रिपोर्टिंग के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने उनको फिर ये बताया, मैंने कहा कि ये लोग प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स नहीं हैं, अगर इनको डिस्क्राइब करना है तो वी हैव टू कॉल देम प्रो इंडिपेंडेंस। और अगले दिन से ही आई मस्ट से टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर कस्तूरी, वो हिंदू ने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, क्योंकि क्योंकि आपको ये भी समझना होता है कि लोगों को इल्म ही नहीं है। और कई बार एटलीस्ट कश्मीर में एक इंटरनेशनल अटेंशन था, मीडिया यहाँ पर थी। आप मणिपुर को ले लें, नॉर्थ ईस्ट को ले लें, दूसरे पार्ट्स को ले लें हिंदुस्तान के, वहां पे तो इसका फोकस ही नहीं है, लोगों को समझ भी नहीं है। और कई इंसर्जेंसीज हुई हैं 60s 70s, मिजोस की, नागास की, जिसका दिल्ली में कोई समझ ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इसकी इंटरनेशनल अटेंशन होने की वजह से देयर वाज अ प्रेस कोर हियर। बट मुझे लगता है कि जो एक 90s में यंगर जनरेशन दिल्ली की मीडिया में आई, उससे मुझे लगता है कि कश्मीर की बात आगे गई। और उसके बाद कश्मीरी रिपोर्टर्स, टुडे द सिचुएशन इज सी चेंज। मतलब आई डोंट थिंक पीपल लाइक यू अजान वर्किंग इन दिल्ली, वो कोई था नहीं बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि हो क्या रहा है। जी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है, आई थिंक जो मेन टेक अवे मेरे लिए है कि आई वॉज एबल टू डू माई जॉब न्यूट्रली एंड इन अ वे ऑब्जेक्टिवली, एंड जो हमने देखा वो हमने रिपोर्ट किया। We'll go out of Kashmir for a bit. आपका, because this is not the only conflict zone you have covered, आपने श्रीलंका में भी आपका 95 से 97 तक आपका रहा है स्टेंट। तो what are the similarities and differences वहाँ पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा as a journalist वहाँ पे? जी देखिए, श्रीलंका कॉमन चीज ये थी कि सिक्योरिटी बहुत थी। जी। तो मुझे याद है कि अगर आप श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ अगर आप कभी मिलने जाएं या इंटरव्यू करने जाएं तो सिक्योरिटी का तामझाम बहुत ज़बरदस्त था। तो मुझे यहाँ का भी मालूम है कि जब यहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाज फाइंडिंग इट्स फीट, तो सिक्योरिटी ऐसी भी होती थी कि वो कई बार मुझे हमारे कुछ कश्मीर पुलिस के दोस्तों ने बताया कि एक अमर कपूर साहब हुआ करते थे आईजी इंटेलिजेंस, तो वो अपने जूनियर्स को कहते थे कि आपने कमरा चेक किया? बोले हाँ। बोले पंखा खोला? तो इस लेवल की सिक्योरिटी थी। तो श्रीलंका में भी मुझे याद है कि एक मर्तबा मैं अपनी मारुति 800 में चंद्रिका कुमारतुंगा जो जब देन प्रेसिडेंट थी उनके ऑफिस गया, तो मैंने देखा कि हमारी मारुति 800 उन्होंने रैंप पे चढ़ा दी है। तो पूरा रैंप पे नीचे से वो देख रहे थे। तो वो एक कॉमनैलिटी थी। लेकिन राइट्स, आइडेंटिटी इश्यूज जो यहाँ पे थे वो वहाँ पे भी थे। तो वो सारी चीजें थी। और श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उस वक्त बात हो रही थी, लेकिन जो आपको पता है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल और वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन, they had taken insurgency and militancy to another level. I don't think there was any group like that. Finally they collapsed like a house of cards, but that's a separate matter. But it was in terms of security, there were many bomb blasts, so you had to be careful, you had to be alert, just like you had to be alert here. So I think as a reporter now, जब मैं आज का कश्मीर देखता हूँ तो मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे वो पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। And you feel that it's good to be in a more normal situation. But Sri Lanka was a tough place also, और हमको जुबान नहीं आती थी, at least here we can converse easily. तो लोग इंग्लिश समझते हैं वहाँ पे, लेकिन it was a tough place to understand and move around. और हम लोग तो ज्यादातर कलम्बो में थे, तो रिपोर्टिंग कैसे करते थे कि वॉर हो रहा है वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट में, और हमारे को प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है अपने फैक्स मशीन पे, और प्रेस रिलीज आ रही है LTT से, लंदन ऑफिस से। तो वो फैक्स मशीन आती थी, फैक्स से रिलीज आती थी, वो कभी कोई 2000 मार रहा है, कभी 4000 मार रहा है, कभी 6000 मार रहा है, तो उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था।
तो एक बहुत बड़ा फर्क था कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम खुद जा सकते थे, इंसिडेंट्स अगर होते तो हम उनको जाके ग्राउंड पे जाके वेरीफाई कर सकते थे। तो अगर कोलंबो में होता तो देन यू कैन वेरीफाई, लेकिन उसके बाहर तो मुझे पता नहीं मैंने कितने लोगों को वहाँ अपनी रिपोर्ट्स में मार दिया। हम लोग क्लेम लिखते थे, लेकिन देयर वाज नो वे ऑफ वेरीफाइंग द क्लेम्स, जस्ट नो वे ऑफ वेरीफाइंग द क्लेम्स। एंड पाकिस्तान, you've served in Pakistan also, you were with the Hindu at that time. That's right. तो पाकिस्तान में आप 97 to 2000 थे, तो वहाँ पे कैसा रहा आपका? जी देखिए, पाकिस्तान में मेरी एक किताब भी है, आजकल शायद अमेज़न पे मिल रही है दोबारा, डेट लाइन इस्लामाबाद, पेंगुइन ने छापी है। तो उसमें देखिए, मैंने जाते ही वहाँ पे नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस का वाक़या हुआ, देयर वाज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। और मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था दूसरी रिपोर्टर्स के साथ, और एकदम से 2 रिपोर्टर्स अंदर आए कि वो अटैक करने वाले हैं, और हम लोग एक जगह कोने में बैठ गए और चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस अंदर भाग गए, और हमने देखा कि हॉकी स्टिक्स वगैरह लेकर लोग वहाँ अंदर घुस गए हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने सबने कहा कि आप यहीं पर खामोशी से पड़े रहें, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी का एक फ़ायदा है कि यू कैन नॉट मेक आउट इफ़ यू लुक एट द फेस अनलेस यू चेक आइडेंटिटी कार्ड और समथिंग। तो वो बहुत बड़ा वाक़या था। और उसके बाद नवाज शरीफ और जुडिशरी की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रही, और फाइनली फिर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो जो सीड्स थे कॉन्फ्लिक्ट के, और नवाज शरीफ साहब ने पहले ही दिखा दिया था कि ही इज़ माई वे और द हाईवे टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो उसके बाद ये हुआ, फिर आपको याद होगा 98 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, मई 98 में। उसके बाद फिर 99 में, शायद फरवरी 99 में वो बस यात्रा रही, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब देवानंद के साथ बस में आए। तो लोग वहाँ पे पाकिस्तान में देवानंद पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था दैन एनीबडी एल्स। तो वो 99 में वो हुआ, और फिर कारगिल का वाक़या हो गया। इनफैक्ट फरवरी 99 में शायद जब वाजपेयी जी आए थे, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो LOC पार करके घुसे हुए थे हिंदुस्तान की टेरिटरी में। तो ये हुआ। उसके बाद फिर अक्टूबर 12 99, 25 साल हो गए। आज 15 तारीख है, तो वो 25 साल हो गए। तो वो कू हमने कवर किया। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाता था तो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हमको कहते थे कि आपको पता है पाकिस्तान में कू कैसे होता है? मैंने कहा नहीं। तो कहते जी वो एक 111 ब्रिगेड है रावलपिंडी में, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए है। तो वो पिंडी से 111 ब्रिगेड की 3 जीप्स चलती हैं। One goes to Pakistan Radio, one goes to PTV, Pakistan Television, and one goes to the Prime Minister's house. And coup happens. So I said, आप क्या मजाक कर रहे हैं? उनसे मैंने कहा, वो जो साहब मुझे ये स्टोरी बता रहे थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो वैसे ही हुआ। Literally like that, jeeps went. The only difference was that we heard the news on PTV. In fact, one of my Pakistani journalist friends' mother heard the news at 4 o'clock that a new army chief had been appointed, and then we were waiting for the 5 o'clock bulletin. And the whole news was read, and there was no reference to Ziauddin's appointment as the new army chief in place of Pervez Musharraf. तो एक शाइस्ता जैद वहाँ की बड़ी वेल नोन न्यूज़ कास्टर हैं, वो पढ़ रही थी उस दिन खबरें। तो वेदर रिपोर्ट भी होगी, तो हमने सोचा कि अब तो ख़त्म है। वेदर रिपोर्ट के बाद फिर ये 5 बजे की बुलेटिन में अनाउंसमेंट आया। तो उसके बाद मैं और शाहिद खान PTI के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वी रश टू द PTV ऑफिस, और हमने देखा वो एक ही फ़ोटो है कू की, कि ये कुछ लोग मिलिट्री के लोग जंप करके PTV का गेट क्रॉस कर रहे हैं। उसकी उस दिन के अखबारों में फ़ोटो भी छपी है। तो दैट वाज द ओनली एविडेंस ऑफ द कू। तो वो मैंने अपनी आँख से देखा। अच्छा। और उसके बाद सही में कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे वाज नॉर्मल। दीज थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान। वो नॉर्मल था, और किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आप एक लास्ट वाकया बता, दिसंबर 1999 में कंधार का हाईजैक हुआ। जी। और वो उस वक्त भी मैं वहीं पर मौजूद था। तो आप सोच लीजिए कि 3.5 साल के स्टे में तकरीबन 3.5 साल के
मैं 3 साल हिंदू के फ्रंट पेज पे रहा हूँगा। तो अच्छा। फॉर अ जर्नलिस्ट इससे बड़ी, श्रीलंका में भी ऐसी था। अच्छा। कि आई गॉट वेरी गुड प्ले। जी। पाकिस्तान में रिसेप्शन कैसा था आपका, मतलब एक्सेस वाइज जर्नलिस्ट वहाँ के जो थे वो कैसे आपसे मतलब रिलेशनशिप कैसा रहा आपका उनके साथ, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे कैसा एक्सेस था, एंड जनरल पीपल हाउ वुड दे रिसीव यू वहाँ पे? जी देखिए, अजान मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हम लोग को, मुझे सब जगह फॉलो करते थे। तो काफ़ी अजीब वाक़या है कि जब मैं शुरू में गया, उस वक़्त भी घर पे कोई फाइल करने का ज़रिया नहीं था। उस वक़्त मेरी वाइफ और फैमिली नहीं आई थी, मीनू हैड नॉट कम। तो मैंने एक साइकिल खरीद ली। तो बड़ा अजीब था कि मैं साइकिल पे चलता था और पीछे पीछे मेरे एक मोटरसाइकिल वाला चलता था। अच्छा। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते थे क्योंकि उनको धीरे धीरे चलाना पड़ता था। अच्छा। तो ये था कि हम कहीं ऐसे इंडिपेंडेंटली जा नहीं सकते थे। फिर बाद में खैर गाड़ी वाड़ी आ गई थी अपने पास। तो ये था कि पीपल वर वेरी नाइस बट दे वर स्कैर्ड, क्योंकि जो इंटेलिजेंस के लोग हमारे घर के बाहर या हमारे पीछे चलते थे, उनका मकसद हमारी सिक्योरिटी नहीं था। उनका मकसद ये था कि जो ऑर्डिनरी पाकिस्तानी है वो हमसे ना मिल पाए, एक्सेस डिनाई करना था मोटा मोटी। आप सोचिए कि अगर मैंने एक फैक्स मशीन लगवाई उस वक्त, तो जैसे ही वो फैक्स टेक्नीशियन बाहर गया तो उसके पीछे पड़ गए कि आप कैसे गए जी, आप कौन है, क्या है, फलाना है। तो कोई भी अगर पाकिस्तानी हमारे घर आता था तो उनको बहुत क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता था। पर एक्सेस ये था कि डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं था, लेकिन इंडियन डिप्लोमेट से हमारी हालत बहुत अच्छी थी क्योंकि हम पार्लियामेंट जा सकते थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फॉरेन ऑफिस में कवर कर सकते थे, और अगर कोई हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हमको बता देते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हम वहां भी पहुंच जाते थे। अच्छा। तो वो जरा सा था। और प्लस जो अखबार थे, तो ये आपको मैं कह दूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि आपका ये 74 ईस्ट पॉडकास्ट यंग जर्नलिस्ट भी सुन रहे होंगे, तो रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड नोइंग हु इज द राइट पर्सन टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। So I am happy to tell you that few days before the coup, the term of Pakistan's army chief was made co-terminus with his term as chairman chiefs of staff committee. अच्छा। उसके 3-4 दिन पहले हिंदू में अपनी एक एनालिसिस में मैंने लिखा, but that does not mean that Nawaz Sharif cannot appoint a new army chief. Few days before the coup. And I could see, for instance, Ayaz Amir, a very well-known columnist of Dawn. At that time, he was in the army. He was a batchmate of many of the people who were generals. So he wrote a column, I remember, saying the stallions in Rawalpindi are getting restive. तो अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं क्या हो रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ आइडिया होता है। तो ये मैं अपनी करियर जो पाकिस्तान का स्टे में, मुझे अपनी रिपोर्टिंग पे ये फख्र है कि मैंने 4 दिन पहले लिख दिया था कि ये हो सकता है कि नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो सकता है। So whether it is in Kashmir, whether it is in Sri Lanka, whether it is in Pakistan or other places, local officials, journalists, people, they are the ones who keep you informed. They are the ones who, अगर वो आपको मिसलीड, और अगर अखबारों में मैं तो बायलाइंस जो पढ़ता था, अगर किसी ने कुछ गलत लिख दिया तो उसके बाद आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, कि उनको पता है कि आपको पता है कि कैसे कैसे लोग स्टोरीज प्लांट भी होती हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में, सब जगह। इट इज अ प्लांटर्स पैराडाइज टुडे, द होल वर्ल्ड, व्हाई ओनली वन प्लेस? So you have to follow your sources, follow the officials, and I must say that my stay in Pakistan was very productive, and I have a sense of that country. Even staying far away, you can get some broad sense of what is happening. अच्छा, because you've been a foreign correspondent most part of your career, तो अब थोड़ा हम करंट पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस करना चाहता मैं। तो अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है इंडिया कनाडा जो डिप्लोमेटिक देख रहे हैं, इसको लेके आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट? So I've just been reading the statements, from the government of India and the Canadian government, but it's clearly a very serious issue. What is surprising to me is that they have even said that the Indian High Commissioner is a person of interest. That is a little surprising to me.
Mr. Sanjay Kumar Verma. He is a member of the Indian Foreign Service. Yes. So, if they have all the information, I think the Canadians would do well to put it in the public domain, because this is, many Indian journalists have now gone to cover because Dr. Jaishankar is in Pakistan for the SCO meeting, but the real action is happening between India and Canada. So my own sense is that it's a very tough time for bilateral relations. And there are very serious allegations which the government of India denies. We will probably never know the truth. That's my understanding. And obviously nationalistic positions will be taken by both sides. But we have to also remember that there is a large Indian diaspora in Canada. And I'm sure the government will be conscious that they have to watch out for the interests of the Indians or Indian origin community that's living in Canada. Okay. You talked about nationalistic politics, and that is something we associate with the Bharatiya Janata Party. Because they have a very hard stand on these issues. So, the Lok Sabha elections concluded earlier this year. Then there have been some state elections also. So, what is the general sense that you get कि अभी जो इंडिया में politics है, where are we headed essentially now? Well, I think it's an interesting time. I think the BJP was very confident. आपको पता है 400 पार का उन्होंने स्लोगन दिया था. जी, जी, जी. तो वो 240 पर सिमट गए और 10-20 अगर और कम होते तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते. सो बट इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग चेंजेस, nothing is static. So they won Haryana, which everybody thought was a done deal for the Congress. So Congress took it very lightly. See, अगर आपको election लड़ना है तो you have to fight till the last person and the last mile. Just because you voted for me last time doesn't mean you will vote for me this time. I have to ask for your vote. I have to go. So I think Congress organization, maybe they put all their eggs in one basket. But I think one other thing is that Congress performance in Jammu was quite pathetic. Yeah. I think in Haryana they fared better than what they did in Jammu. That is true. So, and I think the bedrock of the alliance between the National Conference and the Congress was that the NC probably felt that the vote from Jammu would be delivered by the Congress to this alliance, which didn't happen. And interestingly, you know better that 2 Hindus, I think, were elected from the NC ticket. So my own sense is nationally, Maharashtra elections are coming up. These are very important elections. I was also the resident editor of the Hindu in Bombay briefly. Yeah. So I have some little idea of how things work there. It's a very big state, very important state. A lot of revenue comes from Bombay. And I think BJP will go all out to win these elections. In Haryana, they did a smart thing when they, replaced Khattar with Naib Saini, took some of the sheen. But in Maharashtra, that is not the case. They will have to go with the incumbents they have. And in fact, if you know that the Shiv Sena headed by Eknath Shinde, they performed the best out of the 3 partners in the Lok Sabha elections. So I think this will be a big ticket election to watch. Jharkhand is also there. But overall, I think the kind of authority that the BJP government at the center wielded, that authority has reduced. And I think it would be good that the leadership in Delhi also understood that the people sent them a message that we are not giving you a full majority. The mandate may not have been for the opposition. Yeah. Make no mistake about it. But the mandate was not, a full mandate was not there for the BJP. Definitely some anger and resentment which reflected. Definitely. And the kind of campaign that was run, talking about Mangal Sutra, cows, all those kinds of issues, in my view, very unnecessary. And we have to, India is a secular nation as guaranteed by the Constitution. We must follow our Constitution in every respect. And that's something, and I think the media also everywhere should be conscious of how they report, what they report, because what you do today can come to bite you tomorrow. Yeah, that's true. Our last question again on Kashmir. I want to end the interview with the Kashmir question. So, how do you see things panning out in Kashmir, politically as well as internationally? Essentially,
जो global situation बनते आ रही है, there are wars happening जी. in Middle East, there is instability in Pakistan, there is still the lingering conflict with at the LAC. तो locally politically क्या आपको लग रहा है कि अगले 5 साल एटलीस्ट या अगले 2 साल 3 साल में क्या होगा? I think it's very interesting election. The results have been very interesting. Probably National Conference itself did not expect the kind of seats that they got. And a lot of people came out and voted who had never voted before. I'm sure you Yeah, are yeah, you are more exactly. aware Yeah, than I am that's of true. that. So I think it's an opportunity, and I think not only was it a vote, but I think it may have been a vote for the NC, but it was also a vote against the events of 5th August 2019. And I think I'm sure your viewers know very well what happened at that time. I don't need to repeat it. Now, I think in about 24 hours' time, Umar Abdullah will be sworn in as the chief minister, and I think that his hands have been a little freed of the Congress. I think he will find that he can maneuver his way better in the alliance. That's my broad sense. My wish is that the government here and the government at the center work cooperatively, because whatever it is, an atmosphere of quietude, an atmosphere of relative peace is in the interests of most people. I'm not talking about politics here, I'm just talking about the situation, security situation. So I do hope that the atmosphere that currently prevails, where people are at least free to go about their livelihoods and their work, persists. Internationally, I think, Azan, one thing which strikes me is that in the 90s when I came here, uh, the Western countries, United States, Europe, they took a stance on human rights and people listened to them at that time. An American official coming to Delhi talking about human rights, it was taken seriously by people. I think unfortunately the events of West Asia have taken off the sheen of the Western world, the US included. I don't think they have much of a leg to stand on as far as human rights are concerned. Nobody is going to take the lectures seriously, because we all know that whatever is happening in Palestine and in Lebanon, the United States is as much a partner of Israel as anybody else. And without the backing of the United States, whatever is happening, the kinds of tens of thousands of people who have been killed would never have happened. So my own sense is that Kashmir and Kashmiris, I haven't had much opportunity to discuss this with anyone, but I presume on social media, on television, people must be watching every day whatever is going on. So my own sense is that this is a time to be careful. This is a time to think before you speak. And this is a time for the long term. I would think that Umar Abdullah also, it's not my place to give advice to anybody. We are journalists, we are here to report, analyze. Is that people of Kashmir have given him a mandate, whether it is to fix the electricity or the problem of stray dogs or whatever it is. I think, if law and order is not with him, many other things are with him, forests are with him, water is with him, power is with him. So people want that immediate relief. And I think people want to be able to call their local MLA and say that, hey, this is a problem. While, issues of identity and larger issues of statehood, Article 370, these remain. They are not going anywhere. These can be picked up at any time. So my own sense is that it's a good result. Having an elected government is always better than having governor's rule. We saw this from the 80s. We saw it in the 90s. So I hope and pray that better sense prevails, both in Delhi. And I also want to say that while it is important for Umar Abdullah also to take the other regions along, it is equally important for the BJP in Jammu to behave responsibly, so that the whole state can develop, resources are allocated equitably, and whatever development has happened. I do hear some praise in Srinagar for red bus, for picking up of garbage and so on and so forth. Yeah. So I think that's all to the good. So whether it is the Lieutenant Governor's administration or whether it is the elected government,
and it is the central government. They must work together to ensure that the basic jobs of the day, of the week, of the month, of the year are done. Yeah. So we also hope that better sense prevails, and I want to thank you for coming here, sparing time for us, and I'm hoping that you'll come here again. In your next visit, we'll be able to take a stock of things again whenever you come here. Azan, it was a real pleasure talking to you. Yeah. Thank you so much. I've enjoyed my little conversation with you, Yeah. and thank you very much And again. we will keep on following your podcast, which Yeah, you and do I- very and I- regularly. and Yeah. I hope to come again. Yeah. So that was it from us from the 7-4 East podcast. Please like and subscribe on our Facebook and YouTube, and hopefully we'll bring you the next episode of our podcast very soon.